Okay, so I'm starting now. This हेलो Norton सर। theorem. हाँ. सर एक सवाल है सर एक्चुअली कल की जो होमवर्क प्रॉब्लम जो थे ना हाँ. सर, तो उसमें सर वो हमने वो 8 ओम का रेजिस्टर निकाल दिया सर फॉर द थेवेनिन वोल्टेज हम्म. और उस पर ओपन कर दिया सर। सो व्हेन आई वाज डूइंग मेश एनालिसिस, वो हम्म. नीचे वाली जो कनेक्शन है ना सर बिटवीन दोस टू मेशेस, हाँ हाँ, वो जीरो है, उसमें करंट नहीं आएगा. हाँ सर, आई कुडंट अप्लाई द केसीएल देयर सर। नहीं, उसमें करंट जाएगा नहीं ना, क्योंकि वो तो सेपरेट हो गया ना मैश. वो करंट ओके आके ओके फ्लो आके ऐसे फ्लो हो जाएगा, तो उसमें जीरो हो जाएगा नीचे वाले में. वो अच्छा ऐसे कई क्वेश्चंस में होता है. ठीक है. ओके सर, थैंक यू। हम्म. हेलो सर। हाँ. हाँ सर, आई एम फ्रॉम 18 फरवरी बैच। तो हाँ. सर आज ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट क्लास लगी है। नहीं. तो ये अच्छा. हाँ सर। तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी आज. यस सर। So I will talk to Satish to see what we can do. Okay, if it is required to, if I have to revise again, I will revise again. Okay. ओके So, सर। सर hmm, सर मैंने वो क्वेश्चन लीनियर सर्किट के लिए था। हाँ. तो उसमें ये क्या है कि जो थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं, ओके, वो लीनियर सर्किट पे लगाते हैं. अगर जिसमें उसका अगर डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, इफ देयर इज अ नॉन लीनियर डिवाइसेस, ओके, दैट टाइम वी कैन नॉट अप्लाई दिस थेवेनिन थ्योरम. बट if in a circuit we have a transistor or we have a diode, okay, so उसके अंदर जो linear part है, we can remove the transistor, we can remove the diode, and then at open circuit by making it open we can apply Thevenin theorem. Okay, तो जो circuit में जो linear circuit होगा, नॉन लीनियर डिवाइस के अंदर में जो लीनियर सर्किट होगा, ओके, पार्ट ऑफ द सर्किट वी कैन अप्लाई थेवेनिन थ्योरम. सो व्हेन वी विल डू डायोड एंड ट्रांजिस्टर, दैट टाइम वी विल सी दैट वन. ओके. ओके So, but it is applicable to linear networks only. Okay. So Norton's theorem. Okay. So it says if we have a linear two terminals network. Okay. So that circuit we can replace by a current source. Okay. Along which has a resistance parallel to it. Okay. So say this is Rn and this is In. Okay, so this is our Norton theorems. Okay, now the question is how to measure. Okay, we can replace this non-linear network. Okay, this is AB. Okay, here we have a load A, terminal B. So this non-linear or linear network can be replaced by this current source and resistance parallel to it. So up IN, we have to calculate IN and RN. Okay, so in order to calculate IN, what I'll do, I will short circuit this terminal. Okay, so when I short circuit this terminal, okay, so what will happen, this current will come here, but since this is now short circuit, okay, suppose this is short circuit, so no current will flow across Rn. When I'm making this short circuit IN, okay, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, so सारा करंट क्या होगा, इसी में फ्लो हो जाएगा. That means IN current will flow here. Okay, now similarly if I make it short circuit here, here will be current, short circuit current. Okay, now since both these circuits are equivalent, so I can write IN is equal to ISC. Okay, so if I want to measure IN, I have to measure the short circuit current of this linear network. Okay, and what about this RN? RN is same. RN is same like R Thevenin. Okay, that means resistance at open terminals when independent sources, all independent sources are deactivated. Okay, so if I now I have to make this circuit open. Okay, so at this open terminal, okay, at open terminal whatever resistance I will measure, say Rn, okay, here, that
that resistance, okay, will be equal to R Thevenin. We already done this one, how to calculate R Thevenin. Similarly, we have to calculate this R Norton also. Okay. Now we also know that this linear two terminal network, okay, also can be replaced by a voltage source. Okay, voltage source Vs and V Thevenin and R Thevenin. Okay, we have already seen this one in last class. So that means now these two circuits are also equivalent. So I can also calculate IN. I can calculate V Thevenin. Now I can divide by R Thevenin. Okay, so R Thevenin is divided same like Rn. So this will also give me Norton current. Okay, so that's why this source transformation. This is source transformation. Okay, we had a last class. So this, because of this reason, this source transformation is also said, also called Thevenin Norton transformation. Okay, so this is called Thevenin's Norton transformation. Okay, so now we'll, so you know how to do. First we have to calculate short circuit current, okay, across this terminal. That will give me IN, and then we'll calculate R Thevenin. Okay, that will that is equal to R Norton. So we'll solve one problem. So we have 2 ampere source. Okay. It's 12 volt. This is 4 ohm. Okay. Here we have one 8 ohm resistance. Okay. And here we have 5 ohm resistance. Okay. And here we have RL. RL means is a load resistance. Okay. So we have to convert. Okay. छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है. Okay. So now we have to calculate, okay, Norton equivalent circuit, okay, of left of the AB. RL को छोड़ के बाकी जो सर्किट है उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. सो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेजर करते हैं आई शॉर्ट सर्किट. ओके, दैट मींस फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस सर्किट ओपन. ओके, आफ्टर मेकिंग ओपन दिस सर्किट, okay, we have to short circuit this at the output terminal. Okay, and we have to measure ISC. Okay, now you have to calculate ISC. करो, कैसे कैलकुलेट करोगे ISC? So that means, okay, so this means if I apply mesh analysis, you can do it for mesh analysis or node analysis. So I'm applying mesh analysis. So here this is current is I1, this current is I2. Okay, so I2 current is coming here. Okay, but this is short circuit. Already I told you in the beginning, this is short circuit. So current will not go here. Current will come here. Okay, so we have to make this whole mesh. Now, if you want, in order to make measure ISC, okay, you can remove this 5 ohm because it is already short circuited. This will not count. Okay, so current will come, I2 will come from 8 ohm, and then directly will come here, and then again it will go down. Okay, so here one more resistance is there, 8 ohm resistance is there. Okay, now apply KVL in loop 1. So we can see I1 is 2 ampere already given. Okay, I1 is 2 ampere already given. Now you have to apply I2. Okay, so I'm applying -12. Okay, here I2 minus I1. Okay, so 4 I2 minus 4 I1. Okay, then current will go here, 8 I2, and then again it will come here, 8, 16 I2. So 16 and this 4, this becomes 20 I2.
20 I2 equals to 0. Now I have to calculate I2. So 20 I2 is equal to 12 plus 4 I1. Okay, and I1 value is already given 2 ampere. So this become 12 plus 8, 20. Okay, so if I solve I2, I'll get I2 equal to 1 ampere. So I2 is already coming here. This is I2 only. That means my I short circuit, which is equal to I Norton, okay, is equal to 1 ampere. The answer is 1 ampere. Okay, now calculate R Thevenin कितना आ रहा है? So in order to calculate R Thevenin, okay, what we'll do, we'll short circuit this one and open circuit this one. Okay, सर that हाँ सर ये 20 I2 कैसे हुआ सर? ना या क्या हुआ? ये 20 I2 सर 20 हाँ 20 12 I2 I2 होगा ना टोटल। ये फर्स्ट इक्वेशन है सर। फिर 12 प्लस 4 I1 फर्स्ट- I1 2 है तो 20 हो गया ना, तो I2 1 आ गया। पीछे सर नहीं सर ऊपर -12 प्लस 20 I2 सर। -12 कहाँ पे है? बस ये यहाँ ये ना, हाँ ना सर, माइनस है ना, हाँ। 20 है ना, हाँ प्लस 20 I2 कैसे हुआ सर ये पूछो सर। 20 I2 कैसे हुआ? ओके, यहाँ से 4 I2 आया, 4 I2, Yes, 8 sir. I2, 8 I2, ये Okay, sir. 5 तो नहीं आएगा, 5 हट जाएगा, 5 नहीं करेंगे, इसकी शॉर्ट सर्किट है तो करंट यू फ्लो करेगा। Okay, sir. 4 8 8। ओके, सर फिर -4 I1 सर ये कैसे हुआ सर? 4 into सर, I1 के minus I1 उल्टा आ रहा है ना, फिर हम इस सर्किट में जा रहे हैं, Yes, sir. यहाँ से 4 I2 माइनस 4 I1, ओके सर। इसमें करंट कितना फ्लो रहा है? I2 माइनस I1 फ्लो हो रहा है। यस सर यस सर। Okay, so I2 is 1 ampere, I Norton is 1 ampere. अभी R Thevenin कितना आ रहा है? 4 तो R Thevenin कैसे आएगा? अभी यहाँ से करंट आएगा, यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, तो ये 8 4 और 8, तो ये 16 20 into 5 parallel to 5. Okay, so this become 20 into 5 25, so this become 100 upon 25 4 ohm. Okay, so this become your so I can make now Norton equivalent circuit. अच्छा, मुझे इसमें V Thevenin चाहिए तो कैसे निकालोगे? Calculate V Thevenin also. कितना आ रहा है? ISC by 4 1 by 4 नहीं 1 into 4 1 into 4. ओके ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है। ओके, सो R Thevenin आपने निकाल लिया है, R Thevenin प्लस R Norton आपने निकाल लिया है, that is equal to 4 ohm. Okay, now you can calculate V Thevenin also. So V Thevenin you can calculate from this circuit. Okay, IN into RT so V, तो ये क्या आएगा? I2 into 5 ना, if I solve this one. Okay, so if again if I apply mesh analysis, so this I1 is already given 2 ampere. Okay, so this become -12, okay, plus 4 I2 minus 4 I1. Now 8 16 plus 5 21 I2 again will come. Okay, so 0. I want to measure current. This I2 current. Okay, now it is not short circuit. I want to measure open voltage circuit. So this become -12 plus 25 I2 minus 4 I2 equals to 0. Okay, so 25 I2 minus 4 I1 sir 4 I1 4 I1, yes. So this become 4 I1 plus 12. So I1 is not what? I1 is 8. I1 is 2, so become 8 plus 20. So I2 become 4 by 5. Okay, I2 become 4 by 5, and I want voltage here. So 4 by 5 into 5 ohm is will give you 4 volts again. So V Thevenin is 4 volts. Okay, now V Thevenin is 4 volts. Okay, R Thevenin is 4 ohm. You divide by, you'll get the IN equal to 1 ampere. Okay, so this way you can check also. Okay, so this was your Norton theorem. We'll do one more problem with super mesh analysis. Okay.
and then we'll do it maximum power transfer. So can I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. So is one problem. Plus minus. This is 450 volts. Okay. 90 ohm. Okay. Here we have 4 ampere current source. Then we have 90 ohm resistance, and we have 180 ohm resistance, and this is open. Okay. So calculate now equivalent circuit of this one, Norton equivalent circuit of this circuit. Okay, let me check the question also if this question is correct. So 90 450, yes, correct. Okay, so calculate the Norton equivalent circuit of this one. Okay, so क्या करेंगे सबसे पहले, शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे. शॉर्ट सर्किट करेंगे ना, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. This is IC. Okay, now we'll apply mesh analysis. Okay, now you cannot now this is a current sources in between two meshes. Okay, so you have to apply what? Super mesh analysis. Say this is I1. Okay, so this is I1. Say this is I1. This is I2. और उल्टा करते हैं. This is I1. Okay, and this is I2. So I2 minus I1 is 4 already given. Okay, now remaining part you have to apply mesh analysis. Meshes, we have to take current in the same direction, na? Clockwise or anti-clockwise. So I have taken clockwise ना. Okay. So अभी ये वाला सर्किट में नहीं है, बिकॉज इसको हमने शॉर्ट कर दिया है. तो जो करंट यहाँ पे आएगा वो डायरेक्टली इधर से जाएगा, इसमें नहीं आएगा. ओके, सो नाउ यू अप्लाई दिस मैश एनालिसिस. So this will come 450. Okay, plus 90 I1. Okay, now I am removing this one because this is super mesh analysis. Okay, so current is going that I'm taking this big one. So plus 90 I2 equals to 0. So this become 90. So I1 plus I2 equal to 5. Okay, and here I1 plus I2 is given 4. So if I add both, okay, so this will cancel. So 2I2 equal to 9. So I2 will come 4.5 ampere. Okay, now I have to calculate RThevenin. Sir, you have taken this super mesh because क्योंकि last case में current direct उधर से ही चला जा रहा था ना. क्योंकि करंट इसमें करंट सोर्स बीच में आ गया ना. Yes sir. तो इसलिए इसको हटा दिया. ठीक है, और ये बड़ा मैश ले लिया. अच्छा. Okay sir. Okay, so if you are not comfortable with super mesh, you can apply node analysis or super. हाँ बोलो. सर एक बार ना बता दिया करो सर, सुपर मैश क्या है ना कि मैं ना सर कभी कभी मैश से ही लगाने लगता हूँ ना. हाँ, तो मैंने बताया ना, जब शुरू किया तभी बताया मैंने कि यहाँ पे करंट सोर्स है. सो यू आर अप्लाइंग सुपर मैश. ओके सर. ओके, now this is I2 is 4.5. Okay, now what will the value of RThevenin? 180. Okay, so RThevenin 90 सर. हाँ, आएगा 90 ओम सर. 90 आएगा ना. इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो 180 पैरेलल हो जाएंगे नहीं. सो 180 90 ओम और 180. Yes, sir. Okay,
this is the equivalent circuit. Okay, so 180 का parallel है, तो 180 into 180 360. Okay, this 1 2 90, तो 90 ओम आ जाएगा. Okay, so 90 ओम हो गया. Now I can make equivalent circuit. So current is 4.5 and resistance is 90. Okay, so this current is 4.5 and this is 90 ohm. Okay, calculate VThevenin also here. तो VTH इक्वल टू 405 वोल्ट. हाँ, 405 वोल्ट. 405 वोल्ट. 405 है. यस सर. यस सर. वो तो डायरेक्ट तुमने यहाँ से कैलकुलेट किया ना, यहाँ से कैलकुलेट किया डायरेक्ट. यस सर. वैसे कैलकुलेट करो, वैसे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर चेक हो जाएगा कि तुम्हारा करंट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और तुम्हारे पास दो सोर्सेज है, करंट सोर्स भी है एंड ये भी है, तो लगा दो यहाँ पे, या तो मैश एनालिसिस लगा दो या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, जैसे तुम्हें करना है. सर एक बार बताएंगे आरटीएच इसमें हमने कौन से रजिस्टर इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिए हैं, मतलब 180s भी ये हमको निकालना है RThevenin, तो इसको तो ओपन कर देंगे. ठीक है, यस ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये 90 ऐड हो गया, ये हो गया 180, और ये पूरा 180 इस 180 के पैरेलल में है. क्लियर. ठीक है, अब VThevenin निकालो. VThevenin निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू कंसीडर दिस रेजिस्टेंस, यू टू कैलकुलेट I2 कैलकुलेट करना है तुमको. ठीक है, सेम मैश एनालिसिस लगा दो. तो I2 इज गिवन, मैश एनालिसिस लगा लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लो, जिससे भी तुम करना है. ठीक है, I2 इज 4 एम्पियर. ओके, दिस इज -450. ओके, प्लस 90 I1. ओके, फिर क्या होगा? इक्वल्स टू, okay, what the mistake I've done? Oh, this is super mesh. Okay, so we cannot apply. We have to take this one. I2 is 4 ampere, then -450. Okay, plus 90 I1 plus 90 plus 180, 270. ACL लगा सर. सुपर मैच लेंगे, फिर से दोबारा सुपर मैच ले रहे हैं. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 90. सो 90 मींस I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5. ओके, सो I2 4 कैसे ले लिया सर? I2 ये I2 है ना 4. I2 सॉरी, दिस इज I2 माइनस I1. I2 माइनस I1 इज 4. सो नाउ माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 4, इसको जोड़ दिया. सो 4I2 equal to 9. So I2 equal to 9/4. Okay, correct, 9/4. And you have to multiply by, in order to calculate VThevenin, you have to multiply by 180 because this is I2. So 180 into 9/4. Okay, this becomes 45. And if you multiply, this will give you 405 volts. Okay, and 405 volts divided by 90 ohm कितना आएगा? 4.5. You can check now. This is VThevenin. So सर हाँ, ये इक्वेशन कैसे बनी सर? 90 I1 plus 270 I2. so this is here. Here is the circuit we have. This one current source is there. Okay, so Yes sir, yes sir. so now we'll make mesh analysis, super mesh analysis. Okay, so -450. सुपर मैच करना सर हम. हाँ, सुपर मैश करना है इसमें भी ना. तो सर पिछले में भी तो सुपर मैच ही किया था सर आपने. पिछले बार सुपर मैश करते थे, पिछले बार ये शॉर्ट सर्किट था ना, ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये अभी ये शॉर्ट सर्किट है. अब शॉर्ट सर्किट नहीं है, अभी ओपन सर्किट वोल्टेज है ना VThevenin. तो पहले ये वाला रेजिस्टेंस काम नहीं आ रहा था, अभी ये वाला रेजिस्टेंस काम आ रहा है, 180 वाला. ओके सर, ओके. अच्छा सर, इसमें मुझे एक छोटा सा डाउट है सर. ये सर I1 करंट ये 90 ओम से जाएगा सर, तो वो दो में स्प्लिट हो रहा है ना सर? कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है? I1 करंट अगर हम लोग एज्यूम करें कि ये I1 करंट, 450 वोल्ट और 90. ये I1 करंट आ रहा है. ठीक है, यस सर, तो और दो में स्प्लिट हो रहा है. नहीं, ये तो इसको तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ना, I2 माइनस I1. ठीक है, अच्छा, ओके सर.
So this was your Norton's Sir, theorem. हाँ हेलो सर। सर वो करेंट सोर्स है तो उसमें करंट तो जाएगा नहीं, ऐसे भी करंट सोर्स है तो करंट देगा, करंट लेगा तो हाँ देगा ना सर्किट में, लेकिन इस जहां पर भी ये है इस पूरे पूरे लाइन पे ये 4 एम्पियर करंट देगा। सीरीज व्हाट में सर? भी ये सोर्स जिस भी लाइन पे जिस पे भी है उसके Yes. लीनियर में ये 4 एम्पियर करंट देगा। यस सर, यस सर। हाँ सो सो मतलब उसी कंसेप्ट से ना सर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग I2 माइनस I1। हाँ हाँ उसी कंपेयर से भी यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, यहाँ से I1 आ रहा है I2 फोर जा रहा है फोर तो 4 हो रहा यस है, सर। वही है, इक्वल है। ओके ओके सर। हाँ सर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से कर रहा था तो हाँ। उस पे आंसर नहीं आ रहा है। अरे कैसे नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही। दो जगह दो तरह से कर लिया हमने नॉर्टन थ्योरम में भी थ्योरम करके वो करके, ठीक है। सुपरमोज से भी करते हैं, चलो सुपरमोज से करते हैं। वापस बनाओ सर्किट 450 ओके 90 ओम 4 90 180 okay. So I want to calculate, okay, I want to calculate voltage here, so I want current here, okay. So first I want to calculate due to this 450, okay, say this is v1 I want to calculate, okay. So I have to remove this one, okay. So these three become now series 90 180 360. So current will be how much? Current will be 450 divided by 360, correct? 90 90 80 360. So ये कितना आ गया, करंट कितना आ गया 5/4 into now I have voltage here V1, so 180 into 5/4, so this become 445, okay. कितना आएगा 225 वोल्ट, ठीक है। यस सर। now second time से you are measuring V2, तो ठीक है सर, मैं यहाँ पर ही गलत इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो 90 इधर हो जाएगा तो 270 इधर आ जाएगा, ठीक है, कर ही देते हैं। तो 270 हमको चाहिए 270 में करंट, 270 में करंट चाहिए तो 270 करंट, तो 4 into 90 270 360, ओके। तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट 4 तो 1 एम्पियर, ओके, एंड 1 into 80 180 वोल्ट्स, सो कितना आ जाएगा 5 10 405 वोल्ट्स, ठीक है। Now we are seeing maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem, okay. So this theorem says that maximum power is transferred to the load, okay. So we have one source, say V plus V Thevenin, okay. We have one resistance R Thevenin, okay, and then we have one load RL, okay, RL, which is variable, okay. So this theorem says the maximum power transfer to this load will happen, okay, when RL is equal to R Thevenin. So if I measure maximum power transfer, okay, if I measure power, okay, for value of RL, if I plot the graph, okay, so what will happen if I plot this graph, it says this will be maximum, this will be maximum Pmax for RL equal to R Thevenin value, this will be maximum, okay. जीरो का मतलब क्या है, RL की किस वैल्यू के लिए, RL की किस वैल्यू के लिए पावर जीरो होगा, इफ RL जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पावर, ओके।
Okay, so now we have to calculate. So we know what is the power. Okay, so power can be given as for this circuit V Thevenin square I into R. Okay, power क्या I into R. So I क्या I into R और V Thevenin square upon RL. Okay, ठीक है. RL सही है कि गलत है ये? RTH प्लस RL होगा सर. प्लस RTH होगा ना सर? I square IL square RL. Okay, so IL कितना हो जाएगा? IL हो जाएगा V Thevenin. Okay, V Thevenin square R Thevenin plus RL का square into RL. Now अब लगा दो maximum condition लगा दो. If this is maximum, okay, then dP upon DRL should be 0. तो इसको कर दो, इसको कर दो. So V Thevenin square, okay, और इसको ये तो कांस्टेंट है, V Thevenin तो दिया हुआ है, RL वेरिएबल है. ओके, सो R Thevenin प्लस RL की पावर 4. ओके, RL को करेंगे डिफरेंशिएट एंड देन दिस विल बी एज इट इज. R Thevenin प्लस RL विल बी as it is, square is as it is, minus, okay, RL, and if you do it this one, so 2 R Thevenin plus RL, okay, equals to 0. Now ये चला जाएगा इधर. Thevenin स्क्वायर होगा ना सर? कौन सा? ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में V Thevenin स्क्वायर. ओके, सो अब ये चल जाएगा, ये हो जाएगा 0, इधर से भी 0 हो जाएगा. सो वी गेट R Thevenin प्लस RL कॉमन आ जाएगा. ओके, R Thevenin प्लस RL minus 2RL equals to 0. Okay, so this implies R Thevenin, okay, plus RL minus 2RL. Okay, so this is minus RL equals to 0. So R Thevenin RL equals to R Thevenin. Okay, now you can calculate d2p upon drl. Okay, so it will give you negative value for RL equal to R Thevenin. Okay, so that's a proof that for RL equal to R Thevenin there will be maximum power transfer. Okay, so we'll do one problem based on this theorem. So we have given one circuit plus minus 12 volt. Okay, 6 ohm. Okay, and then we have 12 ohm. Okay, 3 ohm, and then we have one current source 2 ampere. Okay, and then we have this 2 ohm resistance, and we have here RL. Okay, so question asking find the value of RL. Find the value of RL. Find the value of RL. Okay, for maximum power transfer. For maximum power transfer. Okay, and calculate Pmax. Also calculate what is Pmax. Both the things you have to calculate. So we know RL is equal to R Thevenin. So you can calculate R Thevenin very easily. What is R Thevenin? And you want to calculate power. For that you need voltage. Okay, so you can also calculate maximum power. Okay, so we can see here maximum power कितना हो जाएगा. This was our
VThevenin, okay, this is my R Thevenin, okay, and this is why my RL. So I told RL this should be equal to R Thevenin, okay. So now for maximum power, this become 2R. So my maximum power will be VThevenin square upon 4RL. For 4RL के 2 I square V square I square V square I कितना आएगा? 4 सर। V square upon 4 RTH. 4 है 4RL, okay. So this will be your maximum power, okay. So you have to calculate now first value of RL for maximum power transfer, okay, and then you have to calculate VThevenin, okay. So you can find what is the maximum power. So calculate कितना आ रहा है R. पावर V स्क्वायर बाई R होता है ना सर? V square by power R I square RL, okay. yes. And then V square RL by RL, okay. तो कैंसिल हो जाएगा RL स्क्वायर. So V square by RL तो होगा, तो 2RL होगा ना। V स्क्वायर बाई R. हाँ हमारा करंट यहाँ पे 2 है, 2RL होगा हमारा ना करंट सर? यहाँ पे 4, हमारा करंट यहाँ पे 2RL होगा, ठीक है. फिर 2 था तो 4 हो जाएगा. 2 भी यहाँ पे करंट कितना है? V स्क्वायर बाय हमारा सर्किट में देखो ना, इसमें देखो ना करंट कितना है, प्लस माइनस VThevenin. सो दिस इज R एंड R, ओके. सो करंट कितना हो जाएगा? I स्क्वायर. करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4R, ओके. 4R स्क्वायर. V स्क्वायर बाय R होता है फार्मूला ना। अरे भी ये या तो ये लिखो I स्क्वायर RL लिखो, ठीक है. तो I क्या करंट है, V करंट क्या है, V बाय रेजिस्टेंस. तो V बाय 2R V बाय 4R इनटू R. तो V स्क्वायर बाय 4R आ गया ना. वैसे भी कर लो तुम पावर से, वो वैसे कैसे करोगे? तो वैसे तुम्हारा सर हम पोटेंशियल की तो वैसे सर तुम्हारा मैक्सिमम पावर के लिए RTH इज इक्वल टू R हमेशा होता है. हाँ मतलब P मैक्स का फॉर्मूला हमेशा V स्क्वायर बाय 4R ही रहेगा ना. यस 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 यस. ओके सर. ओके. सो नाउ कितना आ रहा है तुम्हारा? सर RL RL कितना आ रहा है? R थेवेनिन कितना आ रहा है? 9 वोल्ट 9 ओम 9 ओम. हाँ 9 ओम आएगा. कैसे आएगा 9 ओम? ओके. सो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 5 और ये 6 into 12 पैरेलल हो गया. तो 5 तो ये सीरीज हो गया एंड 6 into 12, ओके. 6 into 12 आपका पैरेलल हो गया. So 5 plus 6 into 12 18, okay. 2 3 2, so 5 plus 4 is become 9 ohm, ठीक है. नाउ कैलकुलेट VThevenin. VThevenin के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, ओके. ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ रहा है? 16 वोल्ट 16 वोल्ट नहीं, 16 वोल्ट तो नहीं आ रहा मेरा. ओके ओके सर. कैलकुलेट करो. सो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? कौन क्या लगा रहे हो? तो सुपरपोजिशन कैसे? सुपरपोजिशन कैसे लगाओगे? इसमें हमको चाहिए V ये चाहिए ना, इधर चाहिए. ओपन सर्किट है तो यहाँ तो करंट आएगा ही नहीं. हमको यहाँ चाहिए. तो जो आ रहा है आपका V, इस ब्रांच में कितना V आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो या तो तुम लगा लो इसको, नोड एनालिसिस लगा दो, ओके. नोड एनालिसिस लगा लो या फिर मैश एनालिसिस लगा लो, ठीक है. किससे करें? मैश एनालिसिस करें, नोड एनालिसिस करें? मैश एनालिसिस सर. मैश एनालिसिस करते हैं. तो करंट चलो ऐसे जा रहा है तो मैं आपकी बार I2 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है. और इसको मैं I1 ऐसे ले लेता हूँ, ओके. सो अप्लाई हियर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? I2 तो हमारे पास आ गया 2 तो हमारे पास 2 एम्पियर गिवन है, ठीक है. I2 हमारे पास 2 एम्पियर गिवन. I1 की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना? नहीं, दोनों का मैं दोनों को ऐसा लो या दोनों को ऐसा लो, दोनों का सेम ले रहे हैं, ठीक है. तो अभी I1 कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है. तो 12 I1
ओके, माइनस 12i2 इसमें i1 माइनस i2, ओके, एंड देन हियर अगेन 6i1, okay, and then plus 12 equals to 0. So this become 18i1, okay, minus 12i2. i2 की वैल्यू तो 2 एम्पियर, तो minus 24, 2, हाँ, माइनस 2 12 ना फिर सर, -12 आएगा ना, कहाँ पे? 12i1 minus 12i2 12 वोल्ट plus 6i1 minus भी 12 ना, 12i1 minus 12i2 प्लस 6i1 और प्लस 12, यहाँ से प्लस आ रहा है ना, माइनस क्यों आएगा? अगर नीचे से जा रहे हैं तो माइनस आएगा, ऐसे जा रहे हैं तो अभी तो उल्टा सॉरी प्लस आएंगे ना अभी तो। करेक्ट, So 12i1 this become minus 24, okay, so this 12 and 6 18i1, okay, minus 24 plus 12 equals to 0, okay, so 18i1 is equal to minus 12 so plus 12, okay, so i1 equal to 2/3 एम्पियर, ओके, तो ये i1 का वैल्यू आया है हमारे पास में। सर ये हाँ सर ठीक एक है बार दोबारा सर बताएंगे ये इक्वेशन सर कैसे बना? ये इक्वेशन एक बार सर सर, इसमें 3 ओम वाला भी ये 12 है, 3i2 भी तो होगा सर। भी i1 जा रहा है इधर, अच्छा 3 नहीं लिखा क्या हमने? 3 भी तो होगा, हाँ i2 तो ये 3 क्यों होगा? हम तो इसी मैच में ले रहे हैं ना, इस मैच में तो हम लिख ही नहीं रहे, इक्वेशन लिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें तो i2 हमको पता चल गया। ये इक्वेशन तो कब लिखते हैं? जब हमको दो वेरिएबल है, दो मैच है, तो यहाँ तो i2 हमको पता ही चल गया कितना है, ठीक है, तो इस मैच को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको खाली ये मैच ही चाहिए। तो इसमें जाएंगे तो 12i1 और इसमें i2 आ रहा था माइनस 12i2 प्लस 6i1, हाँ सर i2 आ रहा है सर, तो और i1 जा रहा है, तो सर i2 आ रहा है तो प्लस i2 होगा। भाई हम हाँ, किस तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मैच में? हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, सो 12 इंटू i1, ओके, माइनस 12i2। आप चाहो तो क्लॉकवाइज लेके देख लो, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन टेक क्लॉकवाइज बोथ द थिंग्स, ओके। मैंने क्लॉकवाइज सर। मैंने एंटी क्लॉक ले लिया क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। नाउ सर आई i1 2 एम्पियर आ रहा है, हाँ i1 2 एम्पियर आ रहा है सर। 2 कैसे आएगा? 12i1, ओके, 12i2 प्लस 6i1, तो ये हो गया 18i1, ओके। ना i2 इज 2, 24 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 12, 2/3 तो आएगा, Okay, I will check, sorry. ओके। मेरा कितना आ रहा है? मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं, इसको चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा 2/3 कोई इसको नोड एनालिसिस भी कर लो, ठीक है। तो 2/3, हाँ सर ये वाला बात मेरे को समझ नहीं आया, कैसे एक यहाँ लिए माइनस प्लस 12 वोल्ट के लिए सर? कौन सा वाला? भाई मैच आपको बता देता केवीएल कैसे लेते हैं। केवीएल में जो साइन आ रहा है, अभी कैसे, अभी हम करंट ऐसे कर रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस, तो जब इसको प्लस ले रहे हो तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, जब उल्टा चलते हो तो इसको माइनस इसको प्लस, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जो बैटरी का जो टर्मिनल मिलेगा वही तो लेंगे साइन। तो सर यहाँ पे हम प्लस लिए हैं हाँ रेजिस्टेंस में, हाँ तो उसमें ओ ओके सर, करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग। ओके सर, ओके सर, लिख नहीं रहे थे इस वजह से मेरे को दिख नहीं रहा था। अच्छा ठीक है। सो नाउ कितना आ गया हमारे पास में? इस क्वेश्चन को कोई नोड, इस बी को नोड एनालिसिस से भी करो, ठीक है। हम इससे कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्व नहीं किया, मेरे पास आंसर है खाली इसका, ठीक है। सो दिस बिकम नाउ 2/3, ओके। करंट हमारे पास आ गया 2/3, i1 वैल्यू 2/3 आ गया हमारे पास में। तो अब इसमें कितना वोल्टेज रहेगा बताओ? 2/3, सो करंट इसमें 2 आ रहा है ऊपर से और नीचे से जा रहा है 2/3, ओके, तो 2 माइनस 2/3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4/3। तो इसमें करंट फाइनल करंट कैसा रहा है? फाइनल करंट ऐसे जा रहा है 4/3, ओके। तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा? इसमें मेरा वोल्टेज हो जाएगा, हाँ अभी इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब मैं इस मैच पे आ रहा हूँ, इस मैच में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, ओके। सो 4/3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 16 16 वोल्ट, ओके। तो
अब now I can apply KVL here. I know this one 16, I know this is 6. Okay, तो ये कितना हो जाएगा? So now I'm starting here, this is minus, this is plus. Okay, so this is plus minus. So now applying, so they say this is my VThevenin. Okay, so minus VThevenin, okay, plus 6 volt and plus I have 16 volt. Okay, 0. So VThevenin will be my 22 volts. Okay, so we'll do it by mesh analysis also, so we can check now. Okay, so this is by we'll do not for node analysis. Okay, so node analysis, we have to take this is VThevenin and say this is my V1. Okay, so now suppose current is coming here, is going here. Okay, so I can write now 12 minus V1 by 6. Okay, this is coming, and V1 by 12 is going, and V1 minus VThevenin by 3. 3 is going. Okay, so this is first. Okay, so multiply by 12, so this one 24 minus 2V1. Okay, this is V1 plus 4V1 minus 4 VThevenin. Okay, so yeah, so this will give me 5 plus 2 7V1. 7V1 minus 4 VThevenin equal to 24. Yeah, Yes, sir. okay, this is one equation. Now second equation, this is VThevenin. यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है क्योंकि ये 0 है, तो ये करंट आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं. ओके हाँ सर. हाँ सर एक बार नोड एनालिसिस के करंट बता दीजिएगा, सिग्नल लॉस हो गया था सर. नोड एनालिसिस में सपोज ये V1 12 Yes, माइनस V1 अपॉन 6. ओके, ये Yes, करंट sir. आ रहा है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये करंट जा रहा है. ओके, सो V1 अपॉन 12 प्लस V1 माइनस VThevenin अपॉन 3. तो दिस इज इनकमिंग करंट, दिस आउटगोइंग करंट इक्वल. ओके, तो इससे Yes, sir. इक्वेशन बन गया. अब ना VThevenin पे क्या आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट 0 है, तो इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, V1 माइनस VThevenin अपॉन 3. ओके, अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, V1 माइनस VThevenin प्लस 6 minus 0. ओके, अब दोनों को सॉल्व करो, कितना आ रहा है. So if you solve these two equations, we have this one's 7V1. Okay, so V1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 VThevenin minus 6. So 7 VThevenin minus 6. Okay, minus 4 VThevenin is equal to 24. 22 ही आ रहा है. 22 आ रहा है. So 7 with 4, 7 minus 4 3 VThevenin, ये 42. ओके, 42 प्लस माइनस का, तो 24 प्लस 42, सो कितना हो गया, 66. ओके, सो VThevenin कितना आएगा, बाय डिवाइड बाय दिस 22 वोल्ट. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 22 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. यस सर. ओके, सो नाउ वी विल डू वन मोर स्मॉल प्रॉब्लम. ओके, 5 मिनट में हो जाएगी, छोटी सी प्रॉब्लम है. So write the question. The terminal voltage of a voltage source, the terminal voltage, okay, of a voltage source is 12 volt. So terminal voltage is given. Terminal voltage, okay, of a voltage source is 12 volt when connected to a 2 watt load. Okay, so terminal voltage when connected to load. ओके, जिसका लोड का वैल्यू क्या है, 2 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है. टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन एज 12 volts when connected to a load of 2 watts. Okay, when the load is disconnected, the terminal voltage rises to 12.4. When load is disconnected, okay, then terminal voltage is given 12.4 volt when load disconnected. Okay,
Now it is saying calculate the internal resistance of voltage and the value of voltage source. To calculate calculate source voltage, calculate source voltage Vs and internal resistance of the source, internal resistance of the source. ओके तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्लियर है ना? भी एक सोर्स है, बोला है उसके टर्मिनल पे वोल्टेज है, जब उस पे लोड कनेक्टेड है तो उस पे वो 12 वोल्ट दिखा रहा है, जब वोल्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज 12.4 वोल्ट दिखा रहा है। तो पूछ रहा है कि एक्चुअली जो वोल्टेज सोर्स है उसका कितना वोल्टेज है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ओके तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हमारे पास में एक सोर्स है प्लस BS, ओके उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS, ओके और यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है RL, ओके 2 वाट्स, जिसमें 2 वाट्स पावर कंज्यूम हो रहा है, 2 वाट्स, बाद में देखेंगे पावर गिवन एज 2 वाट। ओके तो ये बोल रहा है जब लोड कनेक्टेड है तो इस पे जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू बी लोड, दैट इज 12 वोल्ट, that is 12 volt. Okay, now you know when we remove this load, okay इसको अगर ओपन कर देंगे, when you remove this load so then this will be open circuit, so there will be no current will be flowing. So when there no current will be flowing, this voltage will come here, this. So I told you in the beginning what is the difference between an ideal source and practical source. Okay, ideal source में okay you'll get always constant voltage, because for ideal source internal resistance 0. For practical source the voltage at the terminal varies with the load resistance. Okay, so now you are removing, when you are removing this load, okay so there will be zero current, so no voltage will drop will be here and you get full voltage here, so this will become your source voltage. So now your source voltage become 12.4. This is the first question they're asking, what is the source voltage. Okay, now it asking what is the value of RS. Okay, so now first we'll calculate what is the value of RL. Okay, power is given, okay so voltage will be I square L RL, okay and your IL, okay IL is not given, we have given voltage, V load we have given. Okay, so V square by RL, VL square by RL. Okay, so this given 12, so 12 144. Okay, and RL will be divided by P, and P is given 2 volts, so that will become 72 ohms. Okay, so now we have we know VL, we know RL. Okay, so we can calculate IL. What is IL? Yes. IL कितना हो जाएगा? 1/6 ampere. VL by RL. Okay, so VL अपना है 12 and this 72, so this become 1/6 ampere. Okay, good. Now we know IL also, so we know this IL value. Yes, now sir. I want to calculate internal resistance, so equation लिख दो, KV लिख दो. So we know VL is equal to VS minus IS minus RL. yes. ठीक है? Sir, yes sir. So IL वो होगा ना sir? RS, sorry, IL RS. RS होगा ना? So IL RS will be VS minus VL. Okay. Yes, sir. RS equal to 2.4. So RS will be now 2.4 ohms, sir. VS minus VL upon IL. So VS minus VL is 0.4 and I is 1/6, so ये 6 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 2.4 ohm. Okay, this is correct answer. 2.4 ohm. So now it's the time for homework. कल जो किया होमवर्क सबने किया कि नहीं किया? yes sir. सर एक डाउट है सर. हाँ सर ये इसमें VL 144 दिया है? 12 दिया है ना, 12 V स्क्वायर बाय L कर दिया.
सर RL आपने 144/2 निकाल दिया सर, तो VL 144 कैसा आ गया? ये 12 आपको 12 VL 12 दे रखा है ना, ओके सर, अच्छा V स्क्वायर। और RL हमने ओके निकाला 72 निकाला हमने, ये तो करंट निकाला है, ठीक है, ये तो करंट निकाला है, पावर 12 जो V स्क्वायर है, ठीक है, उससे निकाला था ना हमने, क्या निकाला था, RL निकाला था पहले हमने P स्क्वायर करके, ठीक है। सो नाउ एक होमवर्क लिखो इसमें, फाइंड करंट I, फाइंड करंट I, okay, a source is given 10 ampere, this is 4 ohm, this is 3 ohm, this is the 5 ohm, and this is 3 ampere. Okay, find current I is this one in 3 ohm. Okay, find current I using Norton theorem. Okay, using Norton theorem. Norton theorem मतलब इसको आपको हटा देना है, ओपन करके फिर शॉर्ट सर्किट कर देना है इसको, इस 3 ohm को, and then you have to calculate the I value using Norton theorem. Okay, so this is 3 ओम के अबाउट निकालना है। हाँ 3 ohm के, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। और एक क्वेश्चन देता हूँ, पावर मैक्सिमम से देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो देता हूँ। ओके, इसको मिटा रहा हूँ। Now calculate, find the value of R. Okay, find the value of R. Okay, this is 20 volt, and this is 6 volt, and this is 150, and this is 100. Okay, so it says find the value of R for maximum power transfer. Okay, for the circuit, find the value of R. तो इसको RL मान लेना है, RL मान के ओपन कर देना है, ठीक है। तो find the value of R, find the value of R for maximum power transfer for P max, and also calculate P max. So पहले तो आपको R थेवेनिन निकालना है, R थेवेनिन जो निकलेगा वो R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। And then you have to calculate V Thevenin, so or IL, whatever you want, and then you have to calculate this P maximum value. This is your homework. Okay, so I'm concluding today's class here. Any question? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।